Today I made a program for analog input for the temperature by using temperature sensor PT-100 and this temperature signal transmitter for 4 to 20 milliampere and using this delta analog to digital converter 06XA and delta PLC 14SS2 and I am showing the result on this HMI. मैं जो है ना आज सही एक ट्रू जो है तो आपको एनालॉग का प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसमें आपको एक्चुअल मैं टेम्परेचर कंट्रोल करके दिखाऊंगा। ये टेम्परेचर सेंसर है PT-100, ये PT-100 है। इसके साथ मैंने सिग्नल ट्रांसमीटर भी इस्तेमाल किया है 4 से 20 मिली एम्पेयर का, और इसको मैंने डेल्टा PLC और डेल्टा का कन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया है। ये जो कम्युनिकेट कर रहा है, देखो लाइट ब्लिंक हो रहा है और इसका रिजल्ट मैं आपको इस पर HMI पे दिखा रहा हूँ 26। ये अपना लैपटॉप है जिस पे प्रोग्राम किया और ये पूरा सेटअप है और आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी सब ठंडे पानी में है इसलिए 26 डिग्री दिखा रहा है, 26 showing because it is the sensor is in cold water and this cup is hot water, having hot water and then I will dip in the hot water. जब ये गर्म पानी में मैं डालूंगा तो ये डिग्री चेंज हो जाएंगी। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हम आपको बता रहे हैं ये प्रोग्राम। ये हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरा प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ। आप देखिए ये इंस्टीट्यूट है और ये हम बता रहे हैं आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सेंसर को निकाल के कोल्ड वाटर में से हॉट वाटर में डालता हूँ। जैसा अभी 26 डिग्री दिखा रहा है और ये सेंसर इसमें है, इसमें मैं हॉट में डालता हूँ तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाएगा कैसा हो रहा है। अभी तो 26 दिखा रहा है, 26। नाउ आई विल पुट इन, सी आई एम पुटिंग दिस। देखो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, हॉट वाटर में डालते ही टेम्परेचर बढ़ रहा है। This is a true analog program by using sensor, temperature sensor, PT-100 and temperature signal transmitter and this delta PLC and delta analog digital converter by using this sensor, actual sensor I am using in our institute. Now this sensor is in hot water, so the temperature is 77 degree. Now I will put this sensor in cold water. You can see in front of you. जैसे ही मैं as soon as I put the sensor in cold water, temperature will start decreasing. See this, now it is hot water, in hot water. Now I will put in cold water. This is cold water cup. Now I will put, see this, and see the temperature going down. This is a true analog digital program, complete program by using this actual and original sensor, original transmitter and original program. Now see the temperature drop down to 33. Now it will again drop down to room temperature. This is the laptop on which the program, we make the program. This is the all setup, small setup, and we are using this same thing. Now temperature became 28 degrees, see, room temperature. Now again I will put in hot water. You can see this delta converter is communicating, this light is blinking and everything, this wiring, you can see the wiring. This is the temperature signal transmitter I am using. This is the sensor. I will put this PT-100 sensor in cold water now. You see the temperature, hot water now, because it is in hot water, cold water. So this is hot water, so temperature will increase. See this, I am putting this in front of you. I am putting in hot water. See the temperature will start increasing very fast. This is analog program, original analog program. Now temperature is started. It will start because whatever the temperature of the water, it will do.